Hello and welcome everyone for a new topic in the second lesson of Geography, class 9, Physical Features. And in this lesson, the topic is the Northern Plains. So, topic Northern Plains है. First of all, we are going to find out what is the Northern Plains and what is the extent of the Northern Plains. We all know that the Northern Plains lie between the Deccan Plateau in the south and Himalayas in the north. तो नॉर्दर्न प्लेन वो क्षेत्र है जो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में जो पठारी इलाका है डेक्कन प्लेटो या सेंट्रल हाईलैंड का जो रीजन है उससे घिरा हुआ है। इसी को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द हिमालयास द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग एंड द थ्री रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द इंडस रिवर सिस्टम, दिस रिवर्स ब्रॉट डाउन सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन। तो तीनों रिवर सिस्टम से माउंटेन से सेडिमेंट्स आते थे and these sediments got deposited in the vacant area known as the northern plains, and the northern plains were created by continuous deposit of sediments and alluvium. तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का क्रिएशन हुआ सेडिमेंट्स और एलुवियम का डिपॉजिट होने के बाद, और ये डिपॉजिट वेर of the sediment erosion of sedimentary rocks and they were very fertile. Then we can say that the extent of the northern plains is from Punjab in west to the Assam Valley in the east. तो पंजाब से लेकर आसाम तक इसका एक्सटेंट है एंड द विड्थ इज अबाउट 240 to 320 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर उत्तर दक्षिण है और लंबाई आसाम से लेकर पंजाब में पश्चिम तक है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? व्हाई द नॉर्दर्न प्लेन्स इम्पोर्टेंट? तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो क्षेत्र है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ए लेवल लैंड, एग्रीकल्चर इज डन हियर, राइस, व्हीट, maize, sugarcane, most of the important crops are grown here, a lot of cities are here, a lot of population lives here and densely populated region of the world is here. The states of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, these are the densely populated region. ये क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे समतल जमीन है, जमीन उपजाऊ है, खेती योग्य है, a lot of railways, transports, roadways, airways and the others are developed here. Means there is immense possibility of transport and development. Therefore the region is very densely populated. Now the plains can be divided in three parts. In the western parts the Punjab plains are there, then in the northern central part the plains are there, and in the Assam Valley the Brahmaputra plains are there. Then we can say that these plains have originated from for a long time by the alluvial deposit come down by the Indian rivers, and at places where the deltas are formed like the Sundarban delta, the area is marshy and soggy there. तो जहाँ डेल्टा नदियाँ बनाती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा है सुंदरबन में, that area is very marshy and soggy. Thus we can say that these are the plains created out of alluvium or silt deposited by rivers and these are very fertile. Now we are coming to the next thing. When the river deposits the silt, the older is called बांगड़. तो कहने के मतलब है कि जो ओल्ड एलुवियम है, पुरानी जो डिपोजिट की गई मिट्टी उसको बांगड़ कहते हैं। तो बांगड़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है एंड द न्यू डिपोजिट इज कॉल्ड खादर. Khadar is a new deposit of soil by the rivers on the banks, and when the river is flooded, that flooded river also deposit new soil on its banks and the adjoining areas. It is also called khadar. तो कहने का मतलब है कि नदियाँ जब कटाव करती हैं, यहाँ बाढ़ आती है तो इसमें जो नई मिट्टी है काट के लाई जाती है इसको डिपोजिट करती हैं, इसको खादर कहते हैं. द खादर soil is very rich in nutrients and potash and they are very rich soil, means the food crops can be grown here very easily. Then these soils are ideal for growing food grains and they gave a boost to our economy. तो इकोनॉमिकली नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लॉट ऑफ सिटीज़ आर देयर and these cities are the hub for population because transport facilities are well developed and there are industries that can be serve as employment to people. Therefore this region are valued as very important for the Indian economics. Then
Thank you very much for listening to me. Have a good day. If you have any questions and queries, you can put up, and any problems you can put up. Thanks very much.